Okay. So suppose we are having root 2 plus root 6. We have to prove that this is irrational, right? Yeah. I said that at first we can assume that suppose this is rational, right? Yeah. Okay, where P and Q are co-prime numbers. Now we can take one of the root to the other side. We can leave root 2 or maybe we can leave root 6 over here. Yeah. Okay, so any one of the root we can leave over here and the other root we can take it to the other side. So what are we going to get? We will be having P by Q minus root 6, right? Yeah. Okay, now we will square both sides. Now squaring both sides. So left side will be having root 2 square and right side will be having that P by Q minus root 6 that square. Right, Naweed? Yeah. Let me write. अब हम दोनों साइड को ओके स्क्वायर करेंगे. राइट साइड हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं फॉर्मूला की हेल्प से, तो हम एक्सपैंड कर लेंगे. दैट मीन्स इट विल बी पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, राइट? Yeah. ओके, minus 2ab, that means minus 2 into a into b, or you call it minus 2xy, whatever. Okay, plus root 6 square, right? Yeah. And here root 2 square will be just 2, right? Yeah. Now we will be taking everything on one side. Okay, first let me show you what are we going to take on one side. So here we are having p square by q square. Here we are Yeah. having minus 2 root 6 p by q, right? Yeah. Okay, plus just 6, only 6, right? Yeah. Okay, now we are going to take all these numbers, this 6, which is not irrational. Yeah. Okay, okay, and this one we are, and this 2, we want to keep all of them on one side, and this which looks like irrational, this on another side. Are you getting it? Yeah. Okay, so better to shift this one to the other side because this is having negative sign, right? Yeah. So we are going to take it to the left, and from there 2 we are going to take to this RHS. So we are going to have p square by q square as it is. I'm just copy pasting. 6 I'm copy pasting, and 2 is also coming from the other side. Okay, so can I write plus 6 minus 2? Yeah. And this one I'm going to take to the other side like this, 2 root 6 p by q. Is it making sense? Yeah. Okay, now little bit simplification we will perform over here. So it will be p square by q square. Okay, 6 minus 2 is 4, right? Yeah. Okay, now let's move. Till here, any doubt? No. This type of question was there in your question paper? No. No. It was not. Since this was the first test, okay, review, so it Yeah. must be, the questions must be quite easy, or it was really confusing. Yeah. It was confusing or easy? No. I didn't get to look at the last two questions because the time was up. Like nobody was able to do it. So teacher told that we could do it in the next class. Okay. So p square by q square plus 4. If I'll take LCM, it will be q square over here. Yeah. Okay. And as I was telling you in the last class, when we will take the LCM, can you tell me what will be there in the numerator? So we took q square. Okay. So p square plus 4q square Perfect. Okay. by
Q square, So yeah. if I am telling you that the numerator is an integer over here and the denominator is also integer, that means integer by integer means rational we are having. You are Yeah, agree with that? yeah, I do. Okay. Now from that side we are going to take, okay, everything to this side. This 2, okay, p, q, everything. So 2 root 6 p, and if I'll take the denominators q to this side, can I write q like this? Yeah, yeah, Okay, so this q will cancel out each other. yeah, Fine. So we are having for now p square plus 4q square, okay, by yeah, just q, and still it is rational, integer by integer rational, right? yeah, yeah, Yeah. Now from that side 2p also we are going to bring to this side, so root 6 I am leaving and 2 and p both are in multiplication, so this will come yeah, in division. Can I write it this way? yeah, Okay, so root 6 is equals to p square plus 4q square by 2pq. Clearly we can see integer, okay, by yeah, integer, because if you will multiply, okay, minus 3 with minus 4, result will be integer. yeah, Okay, you take any two integer and multiply it, result will be integer. So denominator is integer, numerator is also integer. Okay, it has to be a rational number. yeah, Okay, but the other side is irrational. We know already that root 6 is irrational. yeah, Here we are not going to prove that root 6 is irrational. Here we will say that we already knew that root 2 is irrational, root 6 is mm, irrational, but we are trying to show that the summation, the addition, okay, that is also irrational. That's what we are trying to show. So we yeah. can say this is not true, okay, because LHS is an irrational, okay, RHS we are having rational, hence our assumption was completely false, right? This, therefore, this contradicts our assumption. Yes. Any confusion? No, no, no. Okay, so last day when we were doing it, the last few steps, the calculation, I have told you that even if you are not doing the calculation, still you can say, right? Yeah, Yeah, but if we will show it like this, it will be perfect. yeah. Okay, next doubt. That is square Uh, one is clear, which I was telling you. yeah, yeah. No, no, it's not. It's not clear, teacher. Okay, so if we are having suppose root 2 plus root 6 whole square, and we are supposed to prove that this is irrational, Yeah, okay, then how you will prove it? So here you will do is you will just expand it. So when we will expand it by using class 9 formula, polynomial chapter, there was formulas, right? X yeah, minus x plus y whole square, x minus y whole square, okay, and few more formulas. So we are going to expand it. This root 2 is square, okay, yeah, plus root 6 is square, yeah, plus 2 into a into b, right? yeah, Which will be just 2, here yeah, just 6. And yeah. last class I was telling you that when root 2 and root 6 we are having, both Yeah, will so all will, yeah, all will be in the same root. So we'll get root 2 root 12. to root 12. So basically we are having 2 plus 6, that means 8 plus 2 Yeah, root 12, right? yeah, Now instead of showing this one as an irrational, okay, this one irrational, if we can show that this one is irrational, we are done, right? yeah, Okay, because both are same thing, just mm, okay, the expanded form we are having below and the above one is the just square form, so it's a same thing. So now we will focus on this part rather than the question one. If we will say suppose this is rational, 8 plus 2 root 12 is rational, so 8 plus 2 root 12, if it is rational, can be written as p by q, where p and q are co-prime integers, right? yeah, Now, in this type of question, are you able to recall that we try isolating this root number on one side? yeah, yeah, I can.
Okay, so 8 we will be taking to this side. It will basically be p by q minus 8. Now we will be doing the simplification over here. Okay, so Yeah, we're going to get p minus 8 by q. Then 2 will come to this side. So root 12 is equals to this. So we can say other side we are having yeah, irrational. teacher. Shouldn't it be P minus 8Q? Yeah, it will be p minus 8q. Okay, thanks for telling me. It has to be p minus 8q by yeah 2q. Okay, which is just the rational, and that side we are having irrational, which is again our assumption is completely baseless, false, contradicting the assumption. Is it clear now, Navid? Yes, yes. Okay, so this is how we'll do this type of questions. Okay, more doubts? No, no. Okay, now let's start with the next chapter, that is polynomial. This chapter 2 has been started already in your school or not? Yeah, polynomials. Yeah, we did start. Already started. Okay, Yeah. so So, we teacher, are when are going, we going to do probability? wait, you are going to do probability in like in your school probability has been started, It has been finished. finished. So which, what are the chapters which is there in the next upcoming exam? Next upcoming exam, I think we have probability. Okay, real number and probability. Yeah, PT1 we got real numbers, and in the second PT we got um, probability. Yeah, okay, then we can start with probability over. Just a moment. So it is already finished in your school. You are able to solve questions from here, probability. A few, because I went to India early, so like I don't know a few concepts, but I know how to solve a few. Yeah, okay, we will be starting from basics. Just a moment. So basically, okay, probability experimental approach. Oh yeah, yeah. Yeah, do you want to say anything? No, 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 nothing. Okay, so probability experimental approach, theoretical approach, all this approach, okay, is telling us there is one and only one formula over here, that if we want to find the probability, formula is we have to check what are the favorable outcome and what is the total number of outcome. For example, if we are tossing a coin, we understand the chances are we'll be getting head or tail. Okay, so total two outcomes we are having. If I am expecting, already I have chosen head, so for me favorable is head, right? Yeah, Okay, so that only one number of favorable outcome we will be taking, how many favorable outcome we are having, and how many total number of outcome we are having. Now what about experimental approach? What is this? So experimental approach means mathematicians have also done these things, like they have done experiment, suppose tossing the coin. Okay, they have done 1,000 time or 10,000 time they have done the experiment. Okay, in reality,
they have done experiment 1,000 times, and they found that like 498 times they are getting head, and 502 times they are getting tail. So that's why they said that 50-50% chances there. Okay, it's not in experiment you can clearly see exactly 50 they have not got, but approximately 50-50% chances are there, right? Yeah. Okay. I'm talking about 1,000, not 10,000. Okay, so 498 and 502. Okay, you can clearly see approximately 50%, 50%. Okay, instead of 498, if it will be 500, 500, then actually 50%, 50% will be there, right? Yeah. Okay, so theoretical approach says that whenever we have to find the probability, this is how we'll be having the probability always. Okay, number of favorable outcome, number of total outcome, these things, this formula you have learned in the previous class as well, right? Yeah. Yeah, when they have performed the experiment, not only 1,000 times, maybe much more bigger number than this one, maybe 10,000 times or more than this one, they found that this is also validating. Okay, that if two things are there, both are having equally likely, both are supposed to be happen. Okay, so let me help you understanding what is equally likely first. So suppose we are having number line, okay, Yeah. नंबर लाइन तुम्हें पता है, जब भी हम इंटीजर की बात कर रहे होते थे लोअर क्लासेस में, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे जहां पे जीरो मिड में होता था, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते थे और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते थे। फिर जब हायर क्लास में तुमने सीखा कि ये नंबर लाइन जो है यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे Yeah. इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। क्लास 9 में तुमने इरेशनल नंबर्स को भी लोकेट किया था तुम्हारे नंबर लाइन पे। ओके, तो वो था नंबर लाइन। ओके, लेटर ऑन वी आर कॉलिंग इट रियल नंबर लाइन। फ्यूचर में हम इस लाइन को रियल नंबर लाइन बुलाएंगे। ओके, क्योंकि इस पे सारे रियल नंबर्स होते हैं। नाउ यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी लाइन की। ओके, जहां जो Yeah. स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 1 पे। ओके, इनके बीच में ही हमेशा हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा। हम जिस केस में भी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमारा या तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगा या 1 आएगा या इनके बीच का कोई नंबर आएगा। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आ गया तो हम इसे श्योर और सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे 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 मैंने तुम्हें एक बास्केट दिया और इस बास्केट में मैंने बहुत सारे बॉल्स को फिल कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ रेड बॉल्स है। ओके, रेड बॉल्स है, और मैं तुम्हें बोलूं जस्ट टेक आउट अ बॉल बट इट हैज टू बी रेड। एक बॉल पिक करो लेकिन वो रेड होना ही चाहिए। तो हाँ। क्या हमें ये समझ में आ रहा है, हम जो भी बॉल यहाँ से निकाले वो रेड ही होगा? हाँ। तो क्या हम अपने लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 100% चांस है रेड निकल के आएगा बॉल? हाँ। हाँ, तो ऐसे इवेंट को हम श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ओके, अब 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे जैसे फिर से मैंने एक बास्केट दे दिया और इस बार मैंने बास्केट में कुछ ब्लैक बॉल्स फिल किए और कुछ रेड बॉल्स फिल किए, और अब मैं बोल रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो क्या हमें समझ में आ, 0. जो भी बॉल हाँ. निकाले येलो तो कभी नहीं आएगा। तो हाँ. ऐसे केसेस में हम बताते हैं प्रोबेबिलिटी हमारा 0 होगा, और जब हमारा रेड निकल के आएगा ही आएगा, हम श्योर है, हम सर्टेन है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होगा। और आज तक तुमने जो भी प्रोबेबिलिटी निकाला है पिछले क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास, वो सारे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच का नंबर ही होता था, हाँ. राइट? क्योंकि Yeah. सोच के देखो, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो हम मैक्सिमम 100 ही अचीव कर सकते हैं। ओके, हाँ. दैट मीन्स 1, इससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि 100 मार्क्स के एग्जाम में हमने 200 स्कोर कर दिया, ऐसा कभी Yeah. पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही परसेंटेज की तरह ही थोड़ा वर्क करता है, दैट
परसेंटेज में हम बोलते हैं 100% टोटल होता है, प्रोबेबिलिटी में हम बोलेंगे टोटल 1 होता है. ओके, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0. ओके, और सारे क्वेश्चंस में हमें इन दोनों के बीच का ही कोई भी नंबर रिजल्ट मिलता है. इतना समझ में आ रहा है? Yeah. नाउ इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है, तो अगर ये जो हमने डिस्कस किया ये समझ में आ रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी हमारे बुक में ऐसा दिखेगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. क्यों, क्या हमने जो डिस्कस किया उसे ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ. ऐसे हम लिख सकते हैं. ओके, ये हमारे पास इनइक्वालिटी साइन है. पहले तुमने इनइक्वालिटी साइन, यू हैव सीन दिस साइन एंड दिस साइन. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जस्ट यू नीड टू नो इट दैट दिस, ये वाला साइन भी एग्जिस्ट करता है एंड दिस साइन ऑल्सो एग्जिस्ट. इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर और इक्वल्स टू. Yeah. Okay, and is the next sign means smaller or equals to. अगर मैं थोड़ा और ब्रीफ दूं इन दोनों साइन के बारे में, तो अगर हमारा x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5 है, ओके, तो इसका मतलब है x का वैल्यू, और मैं बोल रही हूँ x इज एन इंटीजर. ओके, x इज इंटीजर, तो इसका मतलब है x का वैल्यू हमारा या तो 5 या फिर 5 से छोटा नंबर होगा. दैट मीन्स x का पॉसिबल वैल्यू हमारा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1. ओके, आ रहा है समझ में? इस साइन का मतलब क्या होता है नावेद? Which side? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? प्लीज लेट मी नो.
Yeah, sorry, teacher, I got disconnected. Hello? Yeah, can you hear me? Yeah, sorry, teacher, I got disconnected. Yeah, No sorry. worries. Okay, let's continue. So I was telling that you should understand, हमें पता होना चाहिए इस साइन का मतलब क्या है, तो हम इजीली लिख पाएंगे जो हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हाँ, या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है या इनके बीच का कोई नंबर हो सकता है। तो yeah, ये जो साइन है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। ओके, इस साइन का मतलब होता है ईदर स्मॉलर और इक्वल। तो सपोज हम हमारे पास है x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब yeah, होता है या तो x का वैल्यू 5 है या फिर उससे छोटा कोई नंबर है। और साइड में मैंने ये भी डिफाइन करके लिखा है कि x हमारा एक इंटीजर ही है। ओके, तो या तो yeah, x 5 है या फिर 5 से छोटा कोई इंटीजर है। और थोड़े ओके, फ्यू पॉसिबल नंबर्स आई हैव रिटन ओवर हियर, कैन यू सी? yeah, ओके, तो इस साइन का मतलब हमें समझ में आता है, राइट नाविद? yes, yes. सो या अगर हमें इस साइन का मतलब समझ में आता है तो हम खुद से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा कोई नंबर होगा, तो इस ग्रेटर हाँ, और इक्वल्स टू जीरो, राइट? yeah, और साइमल्टेनियसली इट हैज टू बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू वन, राइट? गॉट इट? yeah, नाउ नेक्स्ट थिंग, if we are finding the probability, suppose we are tossing a coin. Okay, we are tossing a coin, and what is the probability of getting head? It will be favorable outcome is 2 yeah, and total outcome, wait, sorry, no, yeah, total outcome is 2 and favorable is 1, right Navid? yes, yes. ओके, हमें हेड चाहिए तो फेवरेबल केस हमारे लिए सिर्फ एक ही है और एक ही टोटल है, केस कितने हैं? टू दो. केसेस है टोटल। ओके, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। Yeah, नाउ अगर हमारे, लेट्स कंटिन्यू, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज हमने एक डाई को थ्रो किया। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग वन ऑन द डाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑन इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑन इट। जब हमने एक डाई को रोल किया तो टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? दो. 1 2 3 4 5 6, राइट? Yeah, 6 हो question. ओके, जब हो गए हमने ढाई. rolling a die will give us total outcome 6, right? Yeah, Probability of getting 1 means again favorable outcome by total. Can you tell me now with what will be the yeah. probability? Rolling a die, total outcome. Yeah. So what's our favorable outcome? 1 Uh, हमें चाहिए, one, okay. 1 1 on by 6. 1/6। ओके, Yeah. सपोज वी वांट टू, ओके, हमारा कोई एक पास कराना है हमें, तो हमें 1 चाहिए। और ऐसे सिचुएशन हम while Mm, playing we encounter, okay, ludo. So yeah, favorable outcome by total outcome probability is 1/6। 2 अगर हमें चाहिए तो probability will be 1/6, right? yeah, Okay, अगर हमें 3 चाहिए तो probability will be 1/6। yeah. अगर हमें 4 भी चाहिए तो probability will be 1 1/6। by 6. Yeah. ओके, अगर हमें 5 भी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। अगर हमें 6 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। यहाँ तक 1 by सब 6. Yeah. Yeah. ओके। पिछले वाले केस में अगर हमें हेड ना, अगर हेड नहीं चाहिए होता, अगर हमें टेल भी चाहिए होता तो फिर भी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, राइट? 1 4. ओके, हाँ. तो यहाँ पे मैं ये बताने वाली हूँ कि जब भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसा आता है 1, ओके, 1/2, Yeah. ओके, Yeah. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 टोटल, ओके, जितने भी आउटकम्स थे Yeah. 1। ऐसे इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, Mm, जहाँ पे हमारा फेवरेबल केस 1 होता है। yeah. और ऐसा सबके लिए होता है, फॉर 2 फॉर 3 फॉर 5।
ओके फॉर 6 रोलिंग वाले केस में। ऐसे इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट बुलाते हैं। Elementary. ओके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ओके, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, ये सारे ही एलिमेंट्री इवेंट है। आ रहा है Mm, समझ में? Yeah. ओके जब हम इन एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, तो हमेशा हमारा रिजल्ट 1 निकल के आएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को ऐड करने बैठे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 1/2। रिजल्ट विल बी 2/2 or 2/2, दैट मीन्स 1, राइट? yeah. ओके ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट सिनारियो में सारे जितने एलिमेंट्री है, जितने हैं उन सबको ऐड करना होगा। ओके जितने Yeah. केसेस निकल सकते हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वी विल बी एडिंग ऑल ऑफ देम 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ओके चलो देख लेते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 plus 1/6 plus 1/6 and our answer will be 6/6, that is 1। ओके Yeah. तो जब भी हम एलिमेंट्री इवेंट्स को के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 निकल के आता है। सो फार एनी कंफ्यूजन? Yes, teacher. सो फार एनी कंफ्यूजन? No, no. ओके आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम किसे कहते हैं और नॉट इक्वली लाइकली किसे कहते हैं। ओके तो Yes. इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हाफ प्रोबेबिलिटी 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। ओके Hmm. ऐसा अगर हमारे पास एक कॉइन है जो कि बायस्ड कॉइन है। ओके अगर हमारे पास एक कॉइन है जो कि बायस्ड कॉइन है, ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों साइड ही हेड है, हाँ. तो उस केस में तो हमें टेल मिलेगा ही नहीं, राइट? Yeah. उस केस में हम बोल सकते हैं कि 50% चांस ही नहीं है। ओके अगर हमारा दोनों साइड में सिर्फ हेड ही दिख रहा है, मतलब हेड आने के चांसेस 100% है और टेल का 0, राइट? Yeah. ओके So ऐसे it's 1. केस को बायस्ड केस भी बोलते हैं। Okay. इन जनरल हमारे क्वेश्चन में अनबायस्ड लिखा होगा, मतलब फेयर, सब कुछ Yeah. फेयर। ओके तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसके Yeah. ऐसे कॉइन के सिनारियो में इक्वली लाइकली का मतलब होता है इक्वल चांसेस है। ओके अगर इफ आई एम गिविंग अ एग्जाम, any higher level exam, okay, and what is the probability of getting, okay, I will clear the exam or maybe I will not clear the exam. So probability of clearing exam and probability not clearing exam, Yeah. ये डिपेंड करता है मेरा प्रिपरेशन कैसा है। Mm-hmm. आप नहीं बोल सकते कि 50% चांस है कि मैं क्लियर कर लूंगी और 50% चांस है हो सकता है मैं क्लियर ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके अगर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है थ्रू आउट द, लाइक मैंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन किया है, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझा है, ओके देन 100% चांसेस देयर आई विल क्लियर। ओके और Yeah. अगर मैंने कोई भी प्रिपरेशन केयरफुली नहीं किया है, देन देयर इज चांस दैट आई विल नॉट क्लियर द एग्जाम। सो Yeah. ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये जो इवेंट है, ओके द फर्स्ट एंड द सेकेंड, ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब इक्वल चांसेस नहीं है दोनों के होने का। Mm. गेटिंग इट? Yes. ओके तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बुक में जो हम एक एक करके देखेंगे। एंड द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी, ओके वी आर स्टार्टिंग अ वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ कार,
Okay, हाँ. the car will start or will not start. ये दोनों क्या इक्वली लाइकली है या नहीं? दोनों के इक्वल चांसेस है। अगर हमने ऑल ऑफ सडन किसी कार में हम बैठे और हमने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, हाँ. क्या 50% चांस है कि कार हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 50% चांस है कि कार स्टार्ट नहीं होगा? तो हम Yeah. या ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ कार। Yeah. ओके, कि कार हमारा कौन से कंडीशन में है। क्या कार ऑलरेडी रखा हुआ है बहुत ईयर्स से, ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, देन द चांसेस इट विल नॉट गेट स्टार्ट। ओके, Yeah. हम शोरूम में जाके जस्ट देख रहे हैं कार, तो भी हो सकता है उन्होंने ओके मैनुअली फिक्स किया है कि स्टार्ट पहली बार में कोई भी ऐसे ही टेस्ट के लिए स्टार्ट ना कर ले, राइट? Yeah. बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं। ओके, कि कार स्टार्ट होगा या कार नहीं स्टार्ट होगा। तो ऐसे केसेस में भी हम इक्वली लाइकली बोलेंगे दिस टू इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। मेकिंग Yeah. सेंस? Yeah. ओके, सो लेट मी शो यू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। Yeah. So the first, the driver one we have already taken. The second is a player attempts to shoot a basketball. He or she shoots Yeah. or misses the shot. We have to answer, is it equally likely or not equally likely? Yeah. Can you tell me, is it equally likely? A player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shot. It is not equally likely. Exactly, it is not equally likely. It depends upon the player. Okay. Yeah. Next, a trial is made It to answer requires me to a true ask. false question. Yeah. The question is right or wrong. Is it equally likely? Trial is trial is me to answer a true and false question. The question is right or wrong. Hmm. Yeah. The trial is made to answer a true or false question. Question is right or wrong. It's not equally likely. एक्चुअली ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ओके, तो अगर Oh, मैंने प्रिपरेशन नहीं भी किया है और मैंने ट्रू मार्क कर दिया, तो हो yeah. सकता है वो राइट हो जाए, राइट? हाँ. हाँ. ओके, अगर मैंने प्रिपरेशन नहीं भी किया है और मैंने फॉल्स मार्क कर दिया, तो हो सकता है, चांसेस तो है ओके कि राइट हो जाए। बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना उस टॉपिक के बारे में जाने भी हो सकता है कि क्वेश्चन मेरा राइट हो जाए, राइट? Yeah. Yeah. तो उसी बेसिस पे हम बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे इक्वली लाइकली है, क्योंकि ये एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जहां मुझे हाँ. ट्रू और फॉल्स लिखना है, ये नहीं दिखाना है कि उस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या सोच रही हूँ। Yeah. तो जस्ट ट्रू और फॉल्स, या वी कैन कॉल इट इक्वली लाइकली। इज इट मेकिंग सेंस, नावेद? Yes. 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 नेक्स्ट,
Okay, a baby is born. It is boy or girl. Yeah. Is it equally likely? Baby is born. Is it a boy? Yeah, I mean it's a 50% chance. Yeah, 50-50. Okay. So yes, we will be calling it equally likely. Okay. Okay. Yes. Let's continue. Now, if I will ask you a question, just a moment, let me write it. A fill in the blanks is there, which looks like this. The probability of an event Yeah. that cannot happen. एक ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो that cannot happen. Okay. Yeah. Das. Okay. Such an event is called. This is the. जैसे कि वो हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक बास्केट है जहां पे ब्लैक बॉल्स है एंड रेड, Yeah. और हमें येलो बॉल पिक करना है, तो Yeah. प्रोबेबिलिटी क्या होगा? What teacher? हमने अभी अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक बास्केट है जहां पे ब्लैक बॉल है एंड रेड बॉल है, और हाँ. हमें यहाँ से येलो बॉल पिक करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ. Probability 0 होगा. जीरो होगा। तो हमसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कैन बी राइट, जीरो. Yeah, we can. Okay, and such an event is called. Such an event is called. What was it called? Um, Impossible. Yeah, impossible. इम्पॉसिबल इवेंट. ओके. Yeah. कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बस बोलेंगे दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, चलो, that's what we need to fill in the blank. Okay, it's an impossible event. Okay, now the next, the probability of an event that is certain to happen Yeah. The probability of an event that is certain to. is dash. Such event is called. Possible event. Sure slash certain event. I think. Yeah. Okay, event is called श्योर और सर्टेन इवेंट. ओके, यहाँ Yeah. पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 100. 100 तो परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी तो फ्रैक्शनल नंबर है. हाँ. कोई भी फ्रैक्शनल नंबर की जब हम बात करते हैं नावेद, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन से, ओके, Yeah. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैक्सिमम हमें 1 मिलेगा. क्यों 1 हाँ. मिलेगा? फ्रैक्शनल नंबर तो 1 से भी बड़ा डेसिमल नंबर हमें देता है, बट वो Yeah. तब देता है जब हमारा न्यूमरेटर बिगर नंबर होता है डिनोमिनेटर से, Mm, तब हमें यहाँ 1 से ज्यादा मिलेगा डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो. yeah. बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर कैसे बिगर हो सकता है? जितना Yeah. है हमारे पास उतने में से ही तो हम सेलेक्ट करेंगे, राइट? अगर Yeah. हेड और टेल आ रहा है तो हेड, टोटल 2 आउटकम आ रहे हैं हमारे पास. ओके, तो हेड सेलेक्ट करना है हमें, तो 2 से कम ही होगा, राइट? फेवरेबल आउट, Yeah. Yeah. क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बिगर हो ही नहीं सकता है यहाँ पे. हाँ. ये हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारा मैक्सिमम 1 हो सकता है. Yeah. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन विल बी 1. गेटिंग इट? Yeah. 1 क्यों हो रहा है?
वन, ये वन वो वाला सिनारियो है जहां पे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो जा रहा है और कैंसिल या आउट वन दे रहा है। या ओके, ये वही सिनारियो है जहां हमारा 100 मार्क्स के एग्जाम में हमने 100 अचीव कर लिया और हम हम्म बोल रहे प्रोबेबिलिटी इज वन। या गेटिंग इट? यस यस ओके, तो श्योर एंड सर्टेन इवेंट की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वन होगा। हाँ, जब हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% हम बुलाएंगे, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो वन बोलेंगे। या ओके, वन इज द मैक्सिमम। नाउ इस ऐसे इवेंट को हम श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं, राइट? या नेक्स्ट, द सम of the probabilities of all elementary events of an experiment is, अगर हमने सारे एलिमेंट्री इवेंट को ऐड किया था प्रोबेबिलिटीज को, ओके, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जितने भी है सबका फेवरेबल केस वन ही है, सिर्फ वन है। या ओके, और ऐसा सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, दैट इज ऑल्सो 1/6, टू, दैट हम्म इज ऑल्सो 1/6। इन सबको ऐड करके हमें क्या मिला था नावेद? वन 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 ओके, ऐसा हेड एंड टेल वाले सिनेरियो में भी मिला था, राइट? या ओके, सो वी विल say that the sum of the probabilities of all elementary event of an experiment is one. या ओके, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है फेवरेबल केस हमारा एक, एक और सिर्फ हाँ दिखेगा। अब वैसे फेवरेबल केस जब हमें मिले हैं, तब हमने जब प्रोबेबिलिटी फाइंड किया और उन सबको ऐड किया तो रिजल्ट हमारा वन आ रहा है। गेट या इट? Now the last one is the probability of an event is the probability of an event is greater than or equal to हम्म dash and less than or equal to dash. Yes. What will be there in the blank? The probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash. The probability of an event is greater than or equal to. Hmm, I'm not sure, teacher. Probability lie between 0 and 1. 0 and 1. Can I say probability can be 0 or more than 0? Yeah, Can be 1 or less than 1? yeah, Probability can be 0, okay, or more than 0. yeah, Okay? It can be smaller than 1 or maybe equal than 1, equal to yeah, 1. Okay, so here we will say 0, here we will say 1. yeah, Getting yeah, it is making sense, right? yeah, Okay, one last fill in the blanks question which I want to discuss in detail. Okay, I'll be giving yeah, examples to you, then you'll be able to say by yourself. That I'll be taking in the next class. yeah, But today, let me summarize what we did. Probability lies between 0 to 1. Probability का yeah. मतलब होता है फ्रैक्शन। ओके, Fraction, yeah. कोई भी फ्रैक्शन मैक्सिमम हमारे केस में वन हो सकता है, मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। yeah, ओके, तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी या तो जीरो हो जाएगा जब एकदम इम्पॉसिबल होगा, कभी हम नहीं बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होगा,
या इम्पॉसिबल है तो उसे हम जीरो बोलेंगे। या कितना इम्पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, ये सब हम बातें नहीं करेंगे। ओके, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो जीरो, और अगर श्योर है तो वन। और अगर उनके बीच में कोई हमें नंबर मिल रहा है एज अ प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। दैट जैसे कि हर बार हमें हाफ हाफ मिलता है हेड और टेल का, तो हमें पता है ये हाफ का मतलब 0.5 होता है, और हाँ ये हाँ नंबर जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। या ओके, अगर हमने 1/6 को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें एक 0 पॉइंट समथिंग